बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का 2020 का पेपर PMS का। चलिए शुरू करते हैं। द सुंदर पास कनेक्ट चित्राल विथ गिलगित। जो सुंदर पास है वो कनेक्ट करता है चित्राल को गिलगित के साथ। कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो कराक्रम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है वो कंप्लीट कब हुई थी? तो रिसर्च करने के बाद जो सही आंसर लिखा हुआ है वो है 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज़ इन। तो जो टॉम्ब है ख्वाजा गुलाम फरीद का वो कहाँ पर है? कोट मिठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान। रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर अटक। रिवर काबुल ज्वाइन इंडस रिवर नियर अटक। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़ प्राइम मिनिस्टर। तो चेयरमैन जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के वो हैं प्राइम मिनिस्टर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। तो पहले मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब थे सरदार अब्दुल रब निश्तर, जो 2 अगस्त 1949 से 24 नवंबर 1951 तक रहे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब प्रेजेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 7 मार्च 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज फजलुल हक। बी नूरुल अमीन। तो नूरुल अमीन सही आंसर है। 20 दिसंबर से 1971 तक 1971 से 21 अप्रैल 1972 तक रहे। What is the minimum age of senator under 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेनेटर की मिनिमम एज क्या है? वो है 30 ईयर्स। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तो कितनी है? 5 ईयर्स। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व असेंबली विद इन 48 आवर्स। तो अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एडवाइस करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ना उनको लाजमन 48 आवर्स में असेंबली को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बेगम शाहराजा शाहनवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर जो है ना ब्रिटिश ने कश्मीर को सोल्ड कर दिया था। और कब हुई थी ये? 16 मार्च 1846 में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कैवेंडिश लेबॉरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK से हासिल की थी ये डिग्री। हब्बा खातून इज़ फेमस पोइटिस। हब्बा खातून इज़ फेमस पोइटिस ऑफ विच लैंग्वेज। तो हब्बा खातून जो है वो फेमस पोइटिस थी कश्मीरी की। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे और वीडियोस देखनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने किस किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए आपको, किस किस वीडियो पे काम करें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज बैंकर। बाय प्रोफेशन वो बैंकर थे। लाहौरी पास कनेक्ट दीर विथ चित्राल इन KPK। डॉक्टर रुथ ऑफ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैम्ब्लैंड अगेंस्ट विच डिसीज? लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द decade 2021 to 30 as the United Nation Decade on Ecosystem Restoration। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GSP+। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन C टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गिवन टू कायदे आजम एट लखनऊ पैक्ट 1916 बाय मिसेस सरोजनी नायडू। कायदे आजम रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ
Promulgation of Rowlatt Act. Wealth of Nation was written by एडम स्मिथ, स्कॉटिश बंदा था ये, स्कॉटिश राइटर। तो वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएस बाय फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है जो यूएस को दिया गया फ्रांस की तरफ से। वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू स्पाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 27. The article 3 of the 17 sustainable development goals of UN relates to good health and well-being. Next question. The Treaty of Versailles settled peace in Europe. International Monetary Fund IMF was created after the Bretton Woods Conference. Bretton Woods Conference के बाद IMF develop किया गया था। China have claim on which part of Indian province? अरुणाचल प्रदेश की तरफ उनका क्लेम है। द पॉलिटिकल टर्म शेडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी। डील ऑफ द सेंचुरी presented by US President Donald Trump in January 2020 is related to Palestine issue. The lengthiest written constitution of the world is Indian Constitution. The Latin word Rex stands for the king. Ho Chi Minh was leader of Vietnam. Continental shelf limit of Pakistan is 350 nautical miles. Soviet Union was replaced by Russian Federation in December 1991. Settlement of border dispute and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pakistan relations. Which of the following diplomat rendered his service to finalize the agreement? Zulfikar Ali Bhutto. Kyoto Protocol for reduction of greenhouse emission came into force in 2005. Pakistan installed her first nuclear power station in Karachi, Kanup 1, with the cooperation of Canada. The Quran and Sunnah are declared the supreme law of Pakistan under the Amendment 9th and also in 15th Amendment, but both these never passed. Kapas Ka Phool is written by Ahmed Nadeem Qasmi. Hugo Chavez was a leader of Venezuela, 45th president from 1999 to 2030. तो ये हुगो चेवेज जो है ना लीडर था वेनेजुएला का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक प्लेस इन 1917. नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर खान won squash championship for 10 miles British Open. In 2018, German Chancellor Angela Merkel was sworn in for 4th time. The World Water Day is celebrated every year on 22 March. The India's current president is Ram Nath Kovind, who was Pakistan's first ambassador to US, Mirza Abul Hassan Ashfani. Jabir bin Hayyan is famous for his work in chemistry. The Pakistani scientist who worked under Albert Einstein, Muhammad Raziuddin Siddiqui. Next question is, India represents what percentage of South Asia's population? 70%. When was sui gas first discovered in Pakistan? In 1952. Oceans cover how much of the Earth's surface? Oceans cover 70% of the Earth's surface. How many members are there in the Security Council? 15. SEPTA, SAARC Preferred Trading Agreement, is a trade agreement by SAARC nations. What is the brightest planet in the solar system? Venus is the brightest planet in the solar system. Next question is, what is the total length of coastline of Pakistan?
1046 is the total length of coastline of Pakistan. Dome of Rock is located in Jerusalem. How many countries are members of South Asian Association for Regional Cooperation SAARC? तो जी 8 कंट्रीज जो हैं SAARC की मेंबर्स हैं. How many official working languages are recognized by UNO? 6. Russian, English, Spanish, Arabic, French, Chinese. The second largest result of the world is Arabian. Which of the following country has no boundary with Syria? Iran has no boundary with Syria. Next question is Sindh was separated from Bombay in 1935. Vasco da Gama was the native of Portugal. The largest earth-filled dam of the world is Tarbela. Arab Spring movement in December 2010 in Middle East started from which country? Tunisia. Timbuktu is the famous city of Mal. Three Gorge Dam is located in China. Next question is approximately what fraction of the human genome encodes protein? 2%. Next question की तरफ चलते हैं and that is in the plant cells which reactions occur in the stroma of the chloroplast? केल्विन साइकिल चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए. स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड. Cirrhosis is a disease that affects which organ among the following? तो ये liver को affect करता है. Next question. According to science, the earth is dash year olds. According to science, the earth is 4.5 billion years old. Dash makes up 14 to 17% of the skeleton. Phosphorus makes up 14 to 17% of skeleton. The vitamin that controls the browning in fruits by the help of enzyme is vitamin C. The average value of fats and oil is 2.25 times more than carbohydrates and protein. The milk needs to be heated for completely pasteurization of 161 Fahrenheit or 72 degree for 15 seconds. Vitamin that is produced by the body and is not found in fruits and vegetables is vitamin B12. Coniferous forests have low biodiversity than tundra. Rocks that contain fossils are sedimentary rocks. Depletion of the ozone layer is caused due to phyrons. Deforestation at large scale can be observed at Amazon forest. Which of the following can be recycled many times? Aluminium. Blank DVDs on which data can be erased and rewritten are identified as DVD-RW, digital versatile disk rewritable. Who gave the idea to combine the internet with the hypertext concept? Tim Berners-Lee. The first mechanical calculating machine was invented by Blaise Pascal. There are two different ways to insert content from one application into another: embedding and importing. What is the name for a web page address? Select from the following. Universal Resource Locator. A function is a predefined formula which can calculate the values given in a specific order. Average age of A and B is 30 years, that of B and C is 32 years, and the average age of C and A is 34 years. The age of C is 36 years.
Complete the sequence 6 11, अब यहाँ पर आ जाएगा 18 और फिर आ जाएगा 27। In an examination 1100 boys and 900 girls appear. 50% of the boys and 40% of the girls pass. The fail percentage is 54.5%. Consider the word segregation, meaning separation. Choose the word given below that reveals the opposite meaning. Integration, option C is right option. Next question. The square of standard deviation is called variance. After the United States, the largest number of global laureates are from United Kingdom. Operation Zarb-e-Azb underwent in the former FATA. Azb was the name of sword of Holy Prophet ﷺ. A study of life in outer space is known as exobiology. Which of the following studies the interaction among organisms and their environment? Ecology. Wakhan corridor is located to the north of Pakistan. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।